Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electronics. So in today's session we are going to discuss about the bridge rectifier, that is the third type of rectifier that we are going to discuss in this video lecture, and we are going to also discuss about the parameters as we have seen in the half and full wave. So the bridge rectifier will be looking like this way, that it is consisting of four diodes. Okay, तो इसके अंदर क्या होगा, there will be one transformer, that is the step down type. Yes, but it is not consisting of the center tapping. Okay, it is a simple one, and that is the most important thing of this bridge rectifier. क्योंकि क्या रहता है, जब भी हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, दैट इज हैविंग सम मोर कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ दैट ट्रांसफार्मर, एंड so it is making the power supply as an more costlier one. So that is not the easy way, तो वो उसको महंगा बनाता है, that is not good for us. ठीक है, so we have find out an alternative way, that we are using one bridge rectifier. So due to that bridge rectifier, what is happening, it is like this way. यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रहा है, so I will draw it like this way, that this is my bridge rectifier. एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, then after it will be easier for you that how to make a bridge rectifier. This is my second diode, another one diode will be attached over here, this is my particular diode, and one more diode will be attached over here like this way. So in order to remember, you must remember like this way, these two are in sync, one direction, and these two are in a one direction. Okay, so more often the people can remember like this way. Here the second terminal of that is connected over here, and the rest of the terminal is expressed over here, and this is my output terminal. In between I am attaching a resistive load. Okay, that is my load resistance, or we can say the load. This is the output terminals between which we are measuring the output voltages, right? So I namely this diode like this way, D1, D4, this one is D3, and this one is D2. So naming are like this way, so this one is D1, this one is D2, D3 and D4. तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती है. जस्ट try to understand these things, that this is a bridge rectifier consisting of four diodes, one step down transformer, line and neutral supply is applied to this step down transformer, and it is stepping down from 230 to somewhat voltages, so we can say 5, 10, 12 or any of the smaller values, right? तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज माई इनपुट सप्लाई. ओके, तो यहाँ पे मैं इनपुट सप्लाई ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ दैट हाउ इट इज बीइंग डन. तो ये मेरा एक इनपुट सप्लाई हो जाएगा. We will try to take 2 cycles in this understanding, so it is better to get the clear idea about the bridge rectifier. And this is my output. See, ये जो है, this is my input है across the time, then this one is my output. We can say this is my input voltages and this one is my output voltages. So for the first half cycle, what is being done, for the second half cycle, what is being done, then after third half cycle, and then after fourth half cycle, and it will sum up and make a 2 complete cycles. Okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने डायोड की फिनोमिना में देखा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब भी यहाँ पे ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, दिस वन विल बी पॉजिटिव एंड दिस वन विल बी नेगेटिव. यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. सो अल्टीमेटली व्हाट इज बीइंग डन, सी
this one diode D1 and this one D2 diode will be in the on condition. ये दोनों क्या हो जाएंगे? Will be in the forward biased condition. So the current of the diode is getting like this way. This current is going through this way and this way. Okay, and the negative path is being provided like this way over here and next to the load. So complete cycle will be like this way. This from here it will be negative side. Okay, this is positive terminal completely, and this one is the second half. So at a time both the diodes will be in the conduction state. So we can say that this will be in the switch off condition and this will be in the switch off condition. So I must draw a waveform for this half cycle like this way, and this is due to the D1 and D2. ओके, तो ये दोनों जो है उसकी वजह से हमें यहाँ पे आउटपुट सप्लाई मिल रहा है. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D3 एंड D4 आर ऑफ, और ये दोनों क्या है? दिस बोथ विल बी इन दी ऑन कंडीशन. फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल अगेन वी विल गेट दिस काइंड ऑफ आउटपुट. सी फुल वेव जो हमें दे रहा था वही आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे कौन से डायोड्स होंगे? सो हियर इट विल बी D4 एंड D3 एंड D4 विल बी इन दी ऑन कंडीशन एंड D1 एंड D2 are in the off condition. For now these two are conducting and these two are in the off condition. So for the off condition what is being done? यहाँ से जो मेरा negative half cycle start होगा, so it will be like this way. This terminal will be negative and this will be positive. So current will flow towards like this way from this and this way to the load resistance. मेरी जो पेन यहाँ से घूम रही है उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा तो ही आपको पता चलेगा. ठीक है. सो दिस वे इट इज मूविंग लाइक दिस वे ओवर हियर एंड इट इज कंप्लीटिंग वन कंप्लीट साइकिल, वन क्लोज्ड पाथ, एंड द सेकेंड दैट इज दिस terminal, that is D4, is having the backwards current like this way. Okay, so it is forming a negative terminal. ये क्या बना रहा है? negative terminal बना रहा है. So it is completing the path. ये जो पाथ है वो इस सर्किट से जुड़ा है और ये वाला पाथ जो है वो इस सर्किट से जुड़ा है. सो कंप्लीटली क्लोज्ड पाथ जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है. सो एट ए टाइम दो डायोड्स जो हैं दैट आर इन दी कंडक्शन मोड. मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़ी देर में एक टेबल भी बना के दूंगा. सो दैट्स व्हाई you will get the clear idea for the which diode is on and which one is in the off condition, and next consecutive cycles will be followed just as before. Okay, तो यहाँ पे again क्या हो जाएगा? Here it will be D3 D4 in the off condition and here it will be D1 and D2 in the off condition. So meanwhile आपको क्या याद रखना है? तो फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, उसके अंदर कौन से कंडक्ट कर रहे हैं? D1 and D2 are in the on state while D2 and D3 and D4 are in the off state. For the negative half cycle, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? D3 and D4 are in the on condition and D1 D2 are in the off condition. तो ये चीज़ें जो है it will be keep on repeating. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रिपीट होता रहेगा for the third and the fourth half cycles. तो आपको चारों के लिए खुद से लिखना है और समझना है और ड्रॉ भी करना है. ठीक है. So that's why we can say that this is a complete full wave rectifier as we are getting this kind of output सेम एज दैट ऑफ दी फुल वेव. फुल वेव में भी ऐसे ही मिल रहा था. सो फुल वेव में जो हमें आउटपुट मिल रहा था इस तरीके का, उसे हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी आउटपुट. ओके, आप बोलेंगे सर डीसी क्यों? डीसी ही है क्योंकि ये पल्सेट कर रहा है. बाकी अदरवाइज ये जो है इसको हम अगर स्मूथ कर सकते हैं by using somewhat different circuitaries. We will see this
in earlier lectures after this, that this pulsating DC will be making this direct current as in the original form, like this way. This is my DC, okay, ये मेरा DC हो जाएगा. तो हमने इसी तरीके के DC को देखा है. तो ये जो है इसे हम बोलते हैं पल्सेटिंग DC करंट और वोल्टेज. ओके, तो जो ये पल्सेटिंग डीसी जो है वो हमें आउटपुट में दे रहा है. कौन कौन? एक फुल वेव और दूसरा जो हमने यहाँ पे अभी देखा है इसे बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर. क्यों ब्रिज? तो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज फॉर्मिंग अ ब्रिज टाइप कंस्ट्रक्शन. दिस इज अ ब्रिज एंड अनदर वन इज ऑल्सो अ ब्रिज. सो it is more oftenly called as an bridge rectifier. So whenever they will ask you to explain the full wave bridge rectifier, इसे बोलते हैं full wave bridge rectifier, then you need to draw this one. Okay, and for the only full wave rectifier you need to draw the previous one, that is consisting of the only two diodes. Okay, जिसके अंदर हमने सिर्फ दो diodes ही यूज किए थे. Okay, all of you must be clear with the idea. Now let's see for the parameters. What are the different parameters? First of all, the DC output voltage almost same रहेगा. DC output voltage जो है वो क्या मिल रहा है 2Vm by pi, जिसे हम बोलते हैं VLDC. The second one, that is my DC output current. DC output current will be also there and it is 2Im by pi and it is denoted by like this way ILDC, right? So this way RMS output voltage, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो BEE के अंदर. आप BEE जो लेक्चर्स थे उनको भी आप रिवाइज कर सकते हो. दे आर हैविंग दिस ऑल दी फॉर्मूलाज इन दैट. द थर्ड इज माय RMS output current and it is denoted like this way IL RMS and is equals to Vm by root 2 into RL. The fourth one, I must say this is my fourth one and this one is fifth one. So ripple factor क्या है? तो ripples कितने अंदर produced है? It is a kind of a noise only and it is same as the full wave 0.482 or 48.2%. The sixth क्या है हमारा? तो that is my rectification efficiency. तो efficiency जो है वो यहाँ पे कितनी मिल रही है? वो बढ़ जाएगी क्योंकि it is the maximum usage of the input current and voltages. So it is giving you the rectification efficiency of 0.81 to 81.2%. PIV rating of this, that is PIV is equals to minus Vm volts. Okay, negative ही होगा. For just to understand this I am denoting it with negative sign. Okay, the eighth parameter, that is my voltage regulation. So we all know voltage regulation, that is RS plus RF. RF will be multiplied by 2 divided by RL multiplied by 100. So it is giving you the voltage regulation. And the 9, that is my ripple frequency. Ripple की frequency कितनी है? That is the more important thing. तो it is the twice the input frequency. ठीक है, तो ट्वाइस दी इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी. The features we need to take of this bridge rectifier, that is the input transformer is not a must. Okay, सबसे पहले input transformer जो है
Input transformer is not a must. It is possible. It is possible to operate the bridge on the 230 volt AC supply. Okay. स्मॉल साइज ट्रांसफॉर्मर जो है वो रिक्वायर्ड होगा. सेंटर टैप जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, जैसे हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा था, नॉट रिक्वायर्ड. तो कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, समवॉट रिड्यूस्ड हो जाएगी. तो अच्छा है, बिकॉज the all over the devices construction, and whenever the product is ready to sell, we all know that we are always checking the price, that how much it will be costing. So if it is lesser cost, then people will buy it more, and otherwise they will buy another things that are cheaper. Okay. हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए भी सूटेबल है. हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए भी सूटेबल है. दिस इज बिकॉज द मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस ईच डायोड. सो द डायोड कैन ब्लॉक दिस काइंड ऑफ नेगेटिव वोल्टेजेस. TUF जो है वो हाई है. TUF इज हाई, दैट इज ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर. हाई एवरेज आउटपुट, high average output. So these are some of the important features of this bridge rectifier. Hope all of you have understood it well and try to solve the examples of this kind of rectifier basis. Okay. So I hope all of you have learned a lot, and if you have learned, then you should like and share the video, and also subscribe to my channel to watch more this kind of videos. Thank you for watching the video.